Good morning children. Our new topic is relative velocity in a plane. What is the meaning of relative velocity beta? Already these topics, whatever topic we are discussing here, we have seen in the motion in straight line as well. But there is the one dimensional motion here. Relative velocity in a plane means relative velocity in two dimensional, or you can say that x and y two planes. Okay. What is the relative velocity beta? First of all, velocity क्या है? Displacement by time. Whatever motion we have or whatever distance displacement we have covered with respect to time, that is the velocity. But when we are talking about relative velocity, that time we have to take two velocity. Suppose we have two velocities. v1 एंड v2 बेटा. सपोज अगर हम पैदल रोड पे चल रहे हैं और साथ में बाजू में आपके अगर कोई बस ट्रेवल कर रहा है, तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू यू और व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू बस, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी. When one velocity is find out with respect to another velocity, that is known as relative velocity. Are you getting my point? Okay, so we have two velocities. अगर एक velocity निकालना है बेटा with respect to another velocity, that time what we will do? Suppose here velocity 1 relative to or with respect to velocity 2, velocity 1 relative to velocity 2, or you can say that velocity 1 is with respect to velocity 2. So how we will find beta? v12 is equal to v1 minus v2. Here we are finding the velocity 1 with respect to velocity 2. Similarly, if you have to find velocity 2 with respect to or relative to velocity 1 beta, then velocity 21 is equal to 2 minus 1. Are you getting my point? Simple beta. Suppose we have two velocities and you have to find the one velocity with respect to another, that time in this way we will find the velocity. One example is given in your textbook, just see that question, then you will able to understand. Let's see one numerical which is based on relative velocity. Please read the textbook. NCERT textbook आपको रीड करना कंपल्सरी है बेटा. एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप टेक्स्ट बुक रीड नहीं करोगे, देन यू विल फेस प्रॉब्लम. क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ओनली. ओके बेटा, सपोज वी हैव टू वेलोसिटी. वेलोसिटी 1 इज 3i प्लस 4j माइनस 4k. सो एक वेलोसिटी है मेरा है बेटा, यहाँ पे एक वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप, एंड सेकेंड वन वेलोसिटी इज 2i कैप प्लस माइनस 3j कैप minus 4k cap. Two velocities are given in that question. One question is here. In this question, two velocities are given. Here I, j, k are the unit vectors. I with respect to x, j y plane में, and k along z axis. x axis के साथ I, j y axis के साथ, and k z axis के साथ. Okay बेटा, understood? मतलब यहाँ पे 3 डायमेंशनल है.
3 प्लेन्स में है, एक्स वाई जेड प्लेन्स में है, 2 वेलोसिटीज दिया हुआ है. वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी. 2 क्वेश्चंस हियर. फर्स्ट, what is the relative velocity of one with respect to 2, and another question is what can you say about this vector. We have to find vector of velocity 1 with respect to velocity 2. There are 2 questions arise in this question. First question is find the vector of velocity 1 with respect to vector 2, as well as we have to find that what can you say about this vector. So first find the velocity of 1 with respect to velocity 2. Then beta what we will do, v12 is equal to v1 minus v2. Put the values. v1 is 3i 4j minus 4k, and then minus, after minus put the next vector in bracket. Okay, so that is 2i minus 3j minus 4k. Okay, after that beta we have to change the sign. Here minus sign change हो जाएगा as you have seen in the maths. Okay, so v12 is equal to 3i cap plus 4j cap minus 4k cap minus 2i plus 3j plus 4k. ओके, सो इसको रिसेंबल कर लो बेटा. आई के साथ आई को ले लो. हियर 3i एंड minus 2i. सो लाइक दैट यू विल राइट. देन प्लस 4j एंड प्लस 3j. सो हियर 4 प्लस 3j. वेक्टर को आप बाहर लिख लो. एंड वन थिंग हियर देखो, minus 4k प्लस 4k, माइनस 4k प्लस 4k, ये आपका बेटा कट जाएगा. सो आंसर क्या आएगा बेटा? 3 minus 2 1. 1i मीन्स ओनली वी विल राइट i कैप प्लस 7j कैप. दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी. दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 with respect to 2. Understood beta? So in this way okay, now visible. Okay, sorry. Okay, in this way beta you can find the velocity of any object when 2 of velocities are given. किसी का भी, अगर सपोज यहाँ पे velocity 2 फाइंड करना है with respect to velocity 1, then we will take here v21 v2 minus v1. Okay, first question is what is the relative velocity of 1 with respect to 2, and second question is here what can you say about the vector. Here beta I is a k, but here only I and j are given, k is not here. It means that रिलेटिव वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है दैट इज लाइज एंटायरली एक्स वाई प्लेन ओनली. जे प्लेन में, जो जेड प्लेन में आ ही नहीं रहा है, ओनली एक्स वाई प्लेन में आ रहा है. सो कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पे? व्हाट कैन यू से अबाउट दिस वेक्टर बेटा? वी विल से अबाउट दिस वेक्टर हियर कि रिजल्टेंट और रिलेटिव वेलोसिटी व्हाट एवर वी आर गेटिंग हियर दैट इज लाइज एंटायरली इन x and y plane only, because k is not in relative velocity. Individual velocities are given in I, j, k means x, y, z plane, but relative velocity is only y and x plane only. Okay बेटा, so इस तरह से और भी न्यूमेरिकल्स देखो. नेक्स्ट वी विल सी नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू बेटा.